Good morning. Let's start with the topic wheelchair accessibility issues. Wheelchair accessibility means what? ऐसी जगह जहां पे हम लोग व्हीलचेयर लेके जा सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी यानी जहां पे पहुंच सकते हैं. जैसे वलसाड में तिथल बीच है तो उन्होंने उसे ऐसा डिजाइन किया है कि कोई भी हैंडीकैप आदमी जिसके पास व्हीलचेयर है वहां पे जा सकता है और उसके इश्यूज यानी उसको क्या इश्यूज होते हैं उसके बारे में पैसेज है. लेट्स लुक एट द वर्ड्स टुडे. फर्स्ट इज अबाउंड. अबाउंड यानी द मीनिंग इज कोई चीज से भरा हुआ, फुल ऑफ दैट. यानी अबाउंड इज कोई जगह पे जहां पे बहुत सारी वो चीज है, दैट प्लेस इज अबाउंड ऑफ, राइट. अकाउंट फॉर यानी किसी का हिसाब देना, हिसाब किताब देना, दैट इज अकाउंट फॉर. या कोई चीज के पीछे कारण दे, दैट इज अकाउंट फॉर. केपेबल यानी कुछ करने के लिए लायक, सक्षम, इज कॉल्ड केपेबल. कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट यानी छोटा और उपयोगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट. जैसे लैपटॉप है तो छोटी सी डिवाइस है लेकिन बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, सो इट इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस, राइट. दैट इज कॉम्पैक्ट. इजी टू यूज, इजी टू कैरी इज कॉम्पैक्ट. कॉरिडोर, कॉरिडोर यानी हमारे घर के बाहर बिल्डिंग में जो चलने की जगह होती है, दुकानों के बाहर चलने का जो स्पेस होता है, जो यहाँ पे जैसे है शॉप के बाहर, दैट वॉकिंग स्पेस इज कॉल्ड द कॉरिडोर. बिल्डिंग्स में हम बोलते हैं गैलरी, घर के बाहर गैलरी. तो गैलरी जनरली इट्स मोर लाइक ओपन स्पेस. लाइक कॉरिडोर बंद भी हो सकता है, चलने का जो रास्ता होता है दैट इज द कॉरिडोर. जैसे ट्रेन में हम चलने के लिए जो चाय वाले चल के जाते हैं आगे पीछे पूरा दिन वो चलते ही रहते, दैट स्पेस इज द कॉरिडोर. नेक्स्ट इज कर्ब. कर्ब यानी कोई चीज को अटका देना, रोक देना, दैट इज कॉल्ड कर्ब. कर्ब का दूसरा मीनिंग होता है फुटपाथ, चलने के लिए जो रास्ता बना होता है, दैट इज अ कर्ब. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी मीन्स अपाहिजता. जब आदमी अपाहिज है, दैट इज ही इज डिसेबल्ड. डिसेबल्ड यानी वो कुछ नहीं कर सकता है कोई चीज, सो ही इज डिसेबल्ड. एक्सटीरियर, जो बाहर का है, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर. इनकैपेसिटेटेड. इनकैपेसिटेटेड यानी जब आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो या फिर आप कुछ करने की हालत में नहीं हो. जैसे आपके हाथ कट गए, पैर कट गए और आप कुछ नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, कोई चीज को पकड़ नहीं सकते, यू आर इनकैपेसिटेटेड. इंटीरियर यानी अंदर का, ऊपर था एक्सटीरियर फिर इंटीरियर. नेसेसिटेट यानी जरूरी बनाना, कोई चीज को जरूरी बनाना, दैट इज कॉल्ड नेसेसिटेट. यानी कि किसी की जरूरत होना, दैट इज नेसेसिटेट. पावर्टी, नॉट पुअर्टी, इट इज कॉल्ड पावर्टी. पावर्टी यानी गरीबी. रैंप. रैंप यानी जो स्टेज पे जो चलने की जगह होती है उसको बोलते हैं रैंप. रेक्रिएशन. रेक्रिएशन यानी मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, उसको बोलेंगे हम रेक्रिएशन. स्लिपरी. स्लिपरी समथिंग जहां पे से आदमी स्लिप हो सकता है, फिसल सकता है, तो फिसला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्लिपरी. और दूसरा है स्लोप. स्लोप यानी ढलान, ऐसी ढलान जहां से आदमी स्लिप हो सकता है, दैट इज अ स्लोप. जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो स्लोप आता है तो गाड़ी वहां से इजीली चलेगी, दैट इज अ स्लोप. स्विच, कोई चीज को अदल बदल करना है, स्विच. स्विच का दूसरा मीनिंग है बटन, राइट, दैट इज स्विच. नेक्स्ट इज टेरेन. टेरेन इज यूज्ड फॉर प्लेस, लैंड के लिए यूज है, जमीन के लिए. तो अलग अलग प्रकार की जो जमीन होती है, जैसे पत्थर वाली जमीन, तो इट इज अ रॉकी टेरेन. टेरेन इज अ टाइप ऑफ एरिया, लैंड इज कॉल्ड टेरेन. और जनरली टेरेन जो होता है वो जमीन से ऊंचा होता है, राइट. पहाड़ का जो एरिया होता है, चट्टानें होती है, दैट इज ऑल कॉल्ड टेरेन. अनविल्डी. अनविल्डी मीन्स जो जिसको हम मैनेज नहीं करते, हैंडल नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड अनविल्डी. संभालना मुश्किल हो जाता है, दैट इज अनविल्डी. एंड अपडेट यानी नया करना, नया बनना, दैट इज अपडेट. सो लेट्स सॉल्व द मीनिंग्स. So now you can see all the words here. Let's match it with the right one. First one, abound. Tell me the meaning of abound. बहुत बड़ा, सबसे भरा हुआ, that is abound.
Station is abound with people, यानी लोगों से भरा हुआ है, so that is abound. Account for is to be responsible, be the cause of, का कारण बनना या किसी चीज की जवाबदारी उठाना, that is account for. Next one, capable यानी L, able to do something, कुछ करने के लायक. Compact is, yes, correct, small, छोटा सा है, तो that is compact. लड़कियों का जो मेकअप होता है जो बहुत छोटे से बॉक्स में होता है उसको भी आई थिंक कॉम्पैक्ट बोलते हैं, राइट? देयर इज कॉम्पैक्ट मेकअप. एंड देन कॉरिडोर इज चलने की जगह, हॉलवे, राइट? नेक्स्ट कर्ब इज, मैंने बोला था फुटपाथ. द रेज्ड एज ऑफ द स्ट्रीट होती है और उसकी साइड पे जो ऊंचा भाग होता है, दैट इज फुटपाथ ओनली, उसको क्या बोलते हैं? Curb. Disability is P, correct. A condition that makes it difficult to do things other people do. दूसरे लोग करे उससे हम नहीं कर सकते, that is called a disability. Incapacitated. Incapacitated. I think I only did one wrong, right? That was exterior, right? So disability is R. Disability is P, right? Okay. And exterior is E, right? The outside of something. Now we come to incapacitated. Incapacitated means unable to do things normally, जो normally नहीं कर सकता. Next one, interior is the inside of something. And necessitate, correct answer is D, to make necessary. What about poverty? Poverty is A, the condition of being poor, गरीब होने की अवस्था. Next one, ramp is a smooth surface that allows access between levels. चलने के लिए जो जगह होती है access करने के लिए, that is a ramp. Recreation यानी leisure activities, entertainment होता है, मनोरंजन, that is called leisure activities. Slippery, H, causing things to slide or slip, फिसलने पे मजबूर करे. Difficult to hold or stand, खड़ा रहना जिसके ऊपर मुश्किल हो जाए. Next one, slope is J, a surface at an angle with the top higher than the bottom, ऊपर का साइड ऊंचा है. Okay, what about switch is K, the button used to turn on lights or machines. Terrain is M, the surface of land, that is terrain. Unwieldy is difficult to manage, and update means to modernize or improve. Are you clear with all of them? Okay, so now these are the words that we are going to see now in our reading passage. Let's start the reading passage. Wheelchair accessibility issues. So Maria, can you read the first paras? Yes, sir. As many as 650 million people worldwide live with some form of physical disability, and about 100 million of the disabled need a wheelchair at least part of the time. Industrialized higher income nations in Asia, Europe, and North America are seen as an older population grow more incapacitated as they age, whereas is lower income countries of Africa, Asia, and Latin America, poverty, conflict, injuries, and accidents account for most disabilities, many of them in children. Continue.
Wheelchairs provide a more independent lifestyle, but they come with their own set of problems. They are unwidely and difficult to maneuver in tight spaces, on slippery surfaces, and on slopes, not to mention impassable stair steps. Accessibility issues abound at home, work, and school, in recreation activities, and in transportation. As many as 650 million people worldwide, दुनिया में इतने सारे लोग live with some form of physical disability. कुछ ना कुछ तरीके से वो अपाहिज है. And about 100 million of the disabled need a wheelchair. यानी 650 में से 100 million ऐसे लोग हैं जिनको wheelchair चाहिए at least part of the time. यानी not full day, लेकिन कभी ना कभी तो उनको wheelchair चाहिए. Industrialized high income nations in Asia, Europe and North America, जो industrialized है, जो modern जगह है, are seeing an older population grow more incapacitated as they age. तो उनकी जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो कई सारी चीजें कर नहीं पाते, यानी दे बिकम इनकैपेसिटेटेड, यानी उनके पैर नहीं काम कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे. तो ऐसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ये प्रॉब्लम होता है. वेरेज इन लोअर इनकम इन कंट्रीज, और वहां पे रिच की बात की तो यहाँ पे जैसे लोअर इनकम कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, ये जो गरीब देश है वहां पे पावर्टी, गरीबी है, कन्फ्लिक्ट, इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स की वजह से अकाउंट फॉर मोस्ट डिसेबिलिटी, मेनी ऑफ देम इन चिल्ड्रन. तो यहाँ पे तो बच्चे तक भी अपाहिज है. लेकिन व्हील चेयर्स की बात करें तो दे प्रोवाइड अ मोर इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल. अगर आपके पास व्हील चेयर है तो आपको कई जगहों पे लोगों का डिपेंडेंस नहीं लेना पड़ता है, बट दे कम विद देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन व्हील चेयर की खुद की प्रॉब्लम, दे आर वाइड, तो कभी कभी जगह रोकती है. अनविल्डी यानी उसको हैंडल करना थोड़ा इजी नहीं होता है. एंड डिफिकल्ट टू मैन्यूवर इन टाइट स्पेस, बहुत छोटी जगह है तो वैसी छोटी जगहों में उसको हैंडल करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. ऑन स्लिपरी सर्फेसेस, अगर कोई स्लिपरी जगह है, पानी वाली जगह है, तो वहां पे भी उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. एंड ऑन स्टीप स्लोप्स, अगर बहुत ऊंचान वाली जगह है तो उसके ऊपर चढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है. नॉट टू मेंशन इम्पॉसिबल स्टेप, और कहीं पे अगर सीढ़ी लगी हुई है तो वहां पे तो पूरा इम्पॉसिबल, यानी आदमी वहां से पास ही नहीं हो सकता. सो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज अबाउंड यानी एक्सेसिबिलिटी यानी वहां पे पहुंचने के इश्यूज जो है वो भर के पड़े हैं. अबाउंड एट होम, वर्क एंड स्कूल. स्कूल में जाओ, ऑफिस में जाओ या घर पे रहो, हर जगह पे लोगों को वहां पे पहुंचने के, हैंडीकैप लोगों को ऊपर नीचे चढ़ने के जो रास्ते होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो हर जगह पे है. इट्स अबाउंड इन रेक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम है. एंड इन ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह पे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज अबाउंड यानी भर के पड़े, जहां देखो उनको प्रॉब्लम होगी. Prachi, can you read next two paras? Yes. One of the most difficult places to use wheelchairs is the home. The average doorway width is about 76 centimeters, fall from 5 to 15 centimeters, short of space necessary to accommodate a wheelchair. To be accessible to a person in a wheelchair, bathroom requires grab bars in showers and tubes, built-in showers, sheets, seats, lower sinks and mirrors, and higher toilet seats. Kitchen needs Kitchens need lower counters and shelves as well as accessible switches for lights, garbage disposals, and exhaust fans. Also, because most homes have at least a few steps, a wheelchair ramp is a must. Continue. Many countries have laws requiring public buildings, workspaces, stores, restaurants, and entertainment and sports facilities to be wheelchair accessible. To accommodate wheelchairs, building exteriors
need wide sidewalks with curved cuts and ramps. Automatic doors, including those in elevators, must be broad and remain open long enough for a person in a wheelchair to come and go with ease. In a building interiors, corridors must be wide enough for a person in a wheelchair and another person on a foot to pass side by side. And carpeting should be firm enough for wheelchairs to roll over easily. Restrooms must be wheelchair accessible too. Although many countries have made this improvement, many more have yet to follow their example. One of the most difficult places, जो सबसे ज्यादा difficult place है wheelchair के लिए, to use a wheelchair is the home. लोग घर में रहते हैं लेकिन घर छोटे होते हैं. The average doorway, घर का जो दरवाजा होता है, that width is about 76 centimeters, that is 30 inches, falls some 5 to 15 centimeters or 2 to 6 inches short of the space necessary to accommodate a wheelchair. यानी वहां से एक दरवाजे के अंदर से wheelchair को गुजरना मुश्किल हो जाता है. To be accessible to a person in a wheelchair, bathrooms require grab showers in grab bars in showers. Showers में अगर जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए bars चाहिए, यानी सरिये चाहिए. And tubs की जरूरत होती है. Built-in shower seats, ऐसी seats जहाँ बैठे ही seats में shower हो जाए. And lower sinks, height नीचे होनी चाहिए basin की. And mirrors and higher toilet seats. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए. Kitchens need lower counters and shelves as well as accessible switches for lights. Light switches भी नीचे होने चाहिए. कचरे का डब्बा, garbage disposals and exhaust fans. तो वो सब उनके लेवल पे होना चाहिए. Also, because most homes have at least a few steps, कुछ ना कुछ stairs तो होते ही है, दादर तो होते ही है घर के अंदर. A wheelchair ramp is a must. यानी उनको उसको चढ़ाने के लिए जो रैंप होना चाहिए वो भी जरूरी है. तो ये घर में, नॉर्मल घर में ये सारी चीजें नहीं मिलती है. Many countries have laws requiring public buildings, workplaces, stores, restaurants and entertainment and sports facilities. कि countries में, कुछ countries में law है कि ये सारी जो चीजें हैं they need to be wheelchair accessible, कि कोई कहीं भी wheelchair वाला आदमी आ सकता है, जा सकता है, वो होना चाहिए. To accommodate wheelchairs, उसको accommodate करने के लिए बिल्डिंग एक्सटीरियर, बिल्डिंग के बाहर का जो स्पेस है, नीड वॉक साइडवेज, चलने के लिए साइडवेज चाहिए विथ कर्व कट्स एंड रैम्प्स. यानी उसके लिए थोड़ा हायर ग्राउंड भी होना चाहिए और वो हायर ग्राउंड पे चढ़ाने के लिए रैंप भी होना चाहिए. Automatic doors, including those at elevators, must be broad and remain open long enough for a person in a wheelchair to come and go with ease. अगर एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो लिफ्ट का दरवाजा भी बड़ा होना चाहिए जिसमें व्हीलचेयर वाला आदमी आ सके और लंबे टाइम तक वो दरवाजा खुला रहना चाहिए. इन अ बिल्डिंग इंटीरियर, बिल्डिंग के अंदर कॉरिडोर, चलने की जो जगह होती है, मस्ट बी वाइड इनफ फॉर अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर. व्हीलचेयर वाला आदमी भी जा सके एंड अनदर पर्सन ऑन फुट टू पास साइड बाय साइड, दोनों आराम से पास हो सके. एंड कार्पेटिंग शुड बी फर्म इनफ फॉर व्हीलचेयर टू रोल ओवर इजीली, और उनकी कार्पेटिंग भी सही होनी चाहिए. Restrooms, any bathrooms must be wheelchair accessible too. Although many countries have made these improvements, many more have yet to follow their example. कई कंट्रियों को अभी फॉलो करना बाकी है. खुशी, can you read the next? Yes. With the appropriate technology, some wheelchair users can drive cars, although getting in and out of a vehicle while in a wheelchair usually necessitates a portable ramp. Many cities have subway and bus systems that accommodate wheelchairs, and the list is growing. For example, Beijing updated its subway system for the 2008 Olympics, providing disabled riders there are access to it for the first time. Continue. In most developing countries, a major concern is not so much wheelchair accessibility as access to a wheelchair. Growing public awareness is contributing to less expensive type of wheelchair being designed for specific environments. For example, chairs capable of maneuvering across dirt roads and rugged terrain, but lightweight and compact so they can fold up to fit in crowd spaces.
such as the easel of a bus. This wheelchair also must be affordable and constructed of locally available materials for easy repair. With appropriate technology, सही टेक्नोलॉजी के साथ, some wheelchair users can drive cars. तो व्हीलचेयर वाले लोग कार भी चला सकते हैं अगर वो कार के अंदर व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी हो. Although getting in and out of a vehicle while in a wheelchair usually necessitates a portable ramp. तो गाड़ी के अंदर ऐसा रैंप लगा होना चाहिए जिससे वो आदमी गाड़ी के अंदर चढ़ पाए और उतर पाए, तो ही वो गाड़ी के अंदर गाड़ी को चला पाए. Many cities have subway, यानी उनका रेलवे सिस्टम है, अंडरग्राउंड रेलवे एंड बस सिस्टम्स that accommodate wheelchairs. तो उसके अंदर व्हीलचेयर का सपोर्ट रहता है. The list is growing. For example, Beijing is in China, updated its subway system for the 2008 Olympics. उनके जो वहाँ पे जो ओलंपिक्स हुए 2008 में, उन्होंने उनकी पूरी रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे को बदला, providing disabled riders their access to it for the first time. वहाँ के हैंडीकैप लोगों को भी एक्सेस मिला. In most developing countries, a major concern is not so much wheelchair accessibility as access to a wheelchair. गरीब देशों में wheelchair accessibility का issue नहीं है, उससे बड़ा issue है wheelchair खुद. लोगों को पहले तो wheelchair देना है, right? Rich countries में लोगों के पास wheelchair है, तो wheelchair वाले लोगों को घूमना है, फिरना है, हर जगह जाना है. तो rich countries को ये देखना है कि भाई हर जगह पे हम handicap लोगों को ला पाए. यहाँ पे wheelchair होना बड़ा प्रॉब्लम कि वो होना चाहिए. Growing public awareness is contributing to less expensive types of wheelchairs being designed for specific environments. यानी जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रहा है तो वो वैसे कम दाम में wheelchairs बना रहा है. For example, chairs capable of maneuvering across dirt roads. गंदी सड़क पे भी wheelchair चल पाए. And rugged terrain, rugged यानी पथरीला जो जमीन है उसके ऊपर भी वो व्हीलचेयर चला सके. But lightweight and compact, तो हल्का भी हो वजन में, compact हो यानी छोटा हो, so they can fold up to fit in crowded space. और उसको fold भी कर पाए और crowded space में carry कर सके, such as the aisle of a bus. बस के अंदर भी उसको छोटा करके ले जा सके. These wheelchairs also must be affordable, सस्ता भी होना चाहिए, and constructed of locally available material for easy repair. तो ही वो repairable होगा अगर मटेरियल वहां का ही है तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेना होगा. So the number of people needing a wheelchair is expected to increase by 22% over the next decade, with most of the increase coming in developing countries. और developing countries में ज्यादा होगा, where fewer than 1% of those in need now have access to one. और आज अभी poor countries में सिर्फ 1% people have access to wheelchair. So answer the questions about wheelchair accessibility issue. In industrialized nations, disabilities are found more among more. जो सुधरे हुए देश है उसमें सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी किस लोगों में पाई जाती है? Older people, children, students or injured people. Correct. Older people, right? और गरीब देशों में बच्चों में भी इंजरी हो जाती है कुछ ना कुछ वजह से, right? To be accessible by wheelchair, wheelchair का उपयोग करने के लिए buildings need क्या चाहिए बिल्डिंग को? More compact curbs, अच्छा छोटा फुटपाथ चाहिए, wider doors and elevators, doors और elevators बड़े होने चाहिए, elevators on the exterior, बाहर की तरफ lift होनी चाहिए या carpets in the interior, A, B, C, D. Correct. Wider doors and corridors. Compact wheelchairs क्या है? They are more unwieldy, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. They are easier to use on a bus, बस पे हैंडल करना इजी होता है. They are less affordable और much wider. It's a easy to use on a bus. Now complete the summary using words from the list below. तो हमारे पास जो words है वो words use करके हमें ये fill in the blank करना है. हमारे words है necessitated, poverty, ramps, recreation, slopes, switches, terrain and updated. So here we go. First one. For people in wheelchairs, accessibility is an issue in most areas of their lives.
एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू होता है, जिसके पास व्हील चेयर उसके लिए कि भाई वहां पे व्हील चेयर है या नहीं है तो ही मैं आऊंगा, वरना मैं आके क्या करूं. Whether they are at home or at school, working or enjoying dash during their free time. What are they enjoying? Recreation. Yes, enjoying recreation, entertainment. तो भी उनका मेन कंसर्न होता है कि व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी उनको मिलनी चाहिए. इन होम्स, घरों के अंदर, थिंग्स नीड टू बी अरेंज. थिंग्स, चीजों को ऐसे अरेंज करना है सो दैट दे कैन बी रीच्ड बाय अ पर्सन इन अ व्हील चेयर. व्हील चेयर वाला आदमी हर चीज को पहुंच सके. Counters, shelves and dash need to be placed lower than usual. Normal से ज्यादा नीचे हाइट पे हमें ये सारी चीजों को करना पड़ेगा. What is the fifth one? Switches. Counters, shelves and Switches. switches. Switches should be at a lower height than usual. And dash must be built in place of the usual front steps. दादर होए, steps होए, सीढ़ी होए, उसके आगे क्या बनाना पड़ेगा? रैम्प्स. रैम्प्स का मीनिंग समझ में आया? जो चढ़ने के लिए जो छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, दैट इज अ रैम्प. पब्लिक बिल्डिंग्स आल्सो नीड टू बी अरेंज. ऐसे बनानी चाहिए टू अलाउ एक्सेस टू पीपल इन व्हीलचेयर्स. ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो एन इश्यू और मेनी सिटीज हैव डैश देयर बसेस. उन्होंने बसेस को क्या किया है? अपडेटेड. Many cities have updated their buses and subways so that it is easier now than it was in the past for people in wheelchair to get around. Right? So these are the words we learned. So let's look at the word family here. The first word we're looking for is capability. कुछ करने की ability is called capability. If a wheelchair has certain capabilities, it is easier to take on a crowded bus or subway. अगर wheelchair के अंदर छोटा करने की, compact करने की capability है, तो उसे हम गाड़ी में ले जा सकते हैं. Capable यानी इंसान, adjective. Some wheelchairs are capable of being folded, and capably is adverb. Capable यानी ability होना. People can get around quite capably with a wheelchair. Wheelchair के साथ लोग बहुत आसानी से कहीं भी जा सकते हैं. Next is disability. Disability એટલે the condition of being disabled. A disability does not have to prevent a person from living a complete life. अगर आदमी disabled है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी लाइफ नहीं जी सकता है. वो पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकता है. Disabled का मीनिंग क्या है? The disabled require many adjustments to a house. Disable यानी कोई चीज को अपाहिज करना. It's a verb. किसी को अपाहिज करना. An accident can disable a person for life. एक एक्सीडेंट आदमी को पूरी लाइफ के लिए अपाहिज कर सकता है. Disabled यानी अपाहिज, adjective. Wheelchairs have helped many disabled people get around. बहुत लोगों को, disabled लोगों को help किया है wheelchair. Next word. Incapacity. Incapacity यानी जो करने की कैपेसिटी नहीं है, तो बोलते हैं incapacity. His growing incapacity did not stop him from enjoying life. वो कई सारी चीजें नहीं कर सकता था, लेकिन इसने उसे लाइफ एंजॉय करने से अटकाया नहीं. उसकी प्रोसेस को नाउन से बोलेंगे incapacitations. Incapacitation caused by aging is one reason that people use wheelchair. यानी उम्र के साथ साथ आप कई सारी चीजें नहीं कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड इनकैपेसिटेशन. ये एक बड़ा कारण है क्यों लोग व्हीलचेयर्स यूज करते हैं. वर्ब है इनकैपेसिटेट, यानी किसी को अपाहिज बना देना या कुछ कर ना पाए. एज, इंजरी एंड इलनेस आर ऑल थिंग्स दैट कैन इनकैपेसिटेट पीपल. लोगों को कोई जख्मी हो जाता है, इंजर हो जाता है, घायल हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, या फिर उम्र के साथ साथ लोग कई सारी चीजें नहीं कर पा सकते. मींस दैट कैन इनकैपेसिटेट. एडजेक्टिव है इनकैपेसिटेटेड, यानी जो आदमी कुछ नहीं कर पाता. पीपल कैन बिकम इनकैपेसिटेटेड विद एज. उम्र के साथ साथ लोग इनकैपेसिटेट हो जाते. नेक्स्ट इज नेसेसिटी. नाउन है जरूरियात. He uses a wheelchair out of necessity. उसकी जरूरत है इसलिए वो wheelchair यूज करता है. Necessitate
यानी इसकी जरूरत पड़ना. व्हील चेयर्स नेसेसिटेट रैम्प्स एंड वाइड कॉरिडोर्स. अगर व्हील चेयर है तो फिर आपको रैम्प और वाइड कॉरिडोर्स की जरूरत पड़ेगी. इट नेसेसिटेट्स. नेक्स्ट, नेसेसरी, जरूरी. रैम्प्स आर नेसेसरी टू अकोमोडेट व्हील चेयर्स एंड नेसेसरीली, जरूरत के साथ, corridors in hospitals are necessarily wide to accommodate wheelchairs. कोई भी हॉस्पिटल होता है तो हम देख सकते हैं कि हमेशा वो बड़े होते हैं चलने के लिए. क्यों? बिकॉज वो व्हीलचेयर को अकोमोडेट करते हैं. नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वन, स्लिप, फिसलना. और फिसलने की जो एक प्रोसेस होती है गड़बड़, उसको भी हम बोलते हैं स्लिप. Slips and falls are a major cause of injury in the elderly. बुढ़े लोगों में गिरना और स्लिप हो जाना, ये दोनों बड़े कारण है कि वो घायल होते हैं. स्लिपरीनेस, इट्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्लिपरी. क्या इसकी स्लिपरीनेस बहुत ज्यादा है. द स्लिपरीनेस ऑफ द रोड आफ्टर एन आइस स्टॉर्म अकाउंट्स फॉर मेनी एक्सीडेंट्स. रोड जब फिसल वाला हो जाता है तब बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. वर्ब इज स्लिप, लपसी जाओ, फिसल जाना. A wheelchair can slip on a wet or icy surface. बर्फीला सरफेस है, बर्फ वाला, तो वहां पे स्लिप होना कॉमन. नेक्स्ट इज स्लिपरी, कोई ऐसी चीज जो बहुत स्लिपरी है, फिसलन वाली. Ice can make a sidewalk too slippery for a wheelchair. So let's look at the right word. You have to match it. So tell me the right form of word here. Physical dash does not dash mean that one has to live a limited life. Physical what? Physical incapacitation does not dash, does not necessarily mean that one has to live a limited life. Wheelchairs, for example, help millions of dash people get around. Disabled people. It helps millions of disabled people get around and live independent lives. Wheelchairs are dash of going just about everywhere. Wheelchairs are capable of just going just about anywhere. As with any form of transportation, कोई भी transportation का form हो, the user has to be careful to avoid accidents. Accidents ना हो उसका ध्यान रखना है. For example, after a snowstorm or rainstorm, बर्फ गिरने पर या बारिश गिरने पर, the dash of sidewalks may make it difficult to maneuver a wheelchair safely. The quality of sidewalks, the slipperiness of sidewalks की वजह से चलना या व्हीलचेयर को चलाना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एक्सटीरियर. एक्सटीरियर के दो मीनिंग है. एज अ नाउन इसका मीनिंग है द आउटसाइड ऑफ समथिंग. एडजेक्टिव है ऑन और ऑफ द आउटसाइड, बाहरी, उसको भी बोलेंगे हम एक्सटीरियर. The exterior doors need to be wide enough to allow wheelchairs to enter the building. बाहरी दरवाजे, A और B, A और B, बाहरी, B ने, बाहरी दरवाजा, right? We need to make sure that the building's exterior, बाहर का जो एरिया है, can accommodate wheelchairs. So this is here now. One more. Interior, the inside of something, किसी चीज के अंदर का हिस्सा, that's a noun. And adjective है in or of the inside, यानी अंदरूनी, अंदर का यानी अंदरूनी, internal, like interior. So here, the interior has been altered to accommodate wheelchairs. A or B? Sakina? It is A. The inside of something, यानी अंदर का हिस्सा बदला गया है कि व्हीलचेयर के लिए. Next, the interior rooms need wider doors. The interior rooms यानी adjective. So answer is B. Okay, so last part is the listening here. Listen to the conversation
choose 4 letters A to F, right? So the question is, which 4 accommodations for wheelchairs are already in place in the building? व्हीलचेयर के लिए कौन सी 4 चीजें को लाया गया है? वाइड कॉरिडोर्स, वाइड डोर्स, रैम्प्स, कर्ब कट्स, elevator and low switches. Listen to the audio and answer the question. Write 4 in your book. Unit 8, Society, Wheelchair Accessibility Issues. Listen to 2 students discussing wheelchair accessibility. We have to plan our report on wheelchair accessibility in this building. The professor wanted us to see what accommodations are already in place and what changes need to be made. Right. So the first thing we need to do is walk around the building and see what's here. We've already done some of that. I have anyway. I measured the corridors, and they're wide enough to accommodate wheelchairs. That's good to know, because I measured some doors, both exterior and interior, and none of them have the necessary width. Then that's the first recommendation we'll have to make, wider doors. I think the building's exterior is fine. There's a ramp at the front entrance, so wheelchairs can get inside the building easily. That's true, but didn't you notice that there aren't any curb cuts? The curb is too high for a wheelchair to get over. So there's a parking place for disabled people in front of the building, but they still can't get a wheelchair over the curb and onto the sidewalk. Yeah, I guess that really would be a problem. So we'll have to recommend curb cuts. The building already has an elevator, so wheelchairs can get to all the floors. Right, so elevators aren't a problem. What about the light switches? Are they low enough on the walls? Yes, I tested some of them by sitting in a chair. They're low enough to reach. All right, so tell me, what are the 4 ones? Wide corridors are there? Yes. Wide doors are there? No. Ramps are there? Yes. Curb cuts are not there. Elevator is there. And low switches are there. Right? Okay, so that brings me to the end. Here we have a bar graph. Look at it, related to disability. And then we have 2 questions. Are the laws in your country? Are there laws in your country that require public buildings to be accessible to disabled people? Yes or no? And then, do you think such laws are a good idea? Definitely they are a good idea. Think about the building where you work or study. Is it accessible to people in wheelchairs? In what ways could accessibility be improved? किस तरह से हम इसे improve कर सकते हैं? Right, that is the end of this vocab session.